You people with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, right. Now, as I told you that when we talk about the DOIs or URLs, so anyone who knows about what is DOI? Yes? Any idea about DOIs? See, DOIs is the digital object identifier. It's basically a string of numbers and symbols. And these string of numbers and symbols, they link that particular article with the web itself. Similarly, we have got this uniform resource locator, right? It is just similar to a kind of address. Like we have got address. So any material you upload, you find on the Google itself. So that every paper is having a URL, right? Some kind of address is there. So you can understand in those terms itself. So whenever there is DOI or URL, you have to mention it. It is needed as per APA referencing. So if there is a DOI, then use the DOI. So sources that have DOIs. Now, how do you identify? You can easily find out that, if there is a journal article, right? If ebooks are there or if online book chapters are there, you need to provide the DOIs. But when it comes to the websites or online newspapers, then therein you can provide the direct URLs, or in case of the newspapers, you have to provide the homepage URL itself. So these are certain sources, certain electronic sources wherein you have to provide the DOIs as well as the URLs in the referencing itself. Okay. Now, since I have told you that there are how many components are there when I talk about the APA style of referencing? Yes, I would like to have an answer from all the students. How many components are there? 2. Very good. Which are those 2 references? One is in-text citation and one is reference citation, which is at the end of the paper. I think Palak has answered the question, probably. Yes. Yes, very good, Palak. Very good, beta. Very good. Okay. So when we are talking about, just a second. Yes. Yes, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, right. So as Palak has very rightly said, we have got in-text citation and we have got the referencing list. Now, first of all, there are certain rules pertaining to the in-text citation. There are certain general rules. First of all, the author and the key and the date, they are the key components, in the in-text citation of APA referencing style. So we focus upon the author as well as the date. In case there is no author, right, no information pertaining to the author is available, use the source title to replace the author's position. So you don't have any author. Many a times you will visit, a certain websites or certain web pages, you will see nobody is there, right? Nobody has written the name, like who has written this particular paper or this particular information. So in that case, you can use, now how do you quote it? How do you acknowledge it? You have used that particular source. So you can write the title in place of the author. Then when it comes to dates, so give the month for the monthlies. If there is a journal which is a monthly journal, so you have to provide the exact month in which, from where you have taken the article, right? From, like, usually we have got so many journals which publish papers every month. Okay. So if you are referring to, let's say, this is April going on, sorry, May going on. So you have referred to a paper in the May publication itself. So you have to give the month in the reference, in the citation itself. Okay. So give the month, day for the weeklies. If it is weekly, then obviously you have to give the month also. You have to give the day also. Which day, like today, it is 6th May, right? So you give the month and you give the day also. And if the journal, the magazine gives the season, not a month, like you can see here, spring season, autumn season,
like that. So you have to mention the year and the spring season. Then the page range. In page range, you make use of in dash. Hyphen is not being used. In dash is being used. This is, on the keyboard itself, you can see there, we have got hyphen. Above the hyphen, there is in dash. It is wider than the hyphen. And there is no gaps between the page numbers and the in dash itself. So there is no gap in between. I hope my cursor is visible to everyone. When you write 21 and 27, in between, there is in dash, there is no gap. Okay. So there are these, this is the basic formats, general, rules pertaining to the in-text citation. In-text citation is wherein you are acknowledging the source that you have used, in the text itself. You are actually writing the lines of a particular author that you have used, or you have paraphrased it like that. So that is known as in-text citation. Now, how do we make the in-text citations? Now, there are different ways of going for in-text citation. We have got number one is the author prominent. Author prominent means that you are giving more prominence to the author. So you start with the author itself. Like here you can see in this particular example, Banner's 2017 suggested that technology has changed the way of consumers make decisions. So the name of the author is included in the sentence. So you're giving prominence to the author. Similarly, now herein you are giving prominence to the idea, that is known as idea prominent. So now the same person you're focusing upon, technology has made a fundamental difference to the way of consumers make decisions. So now here you are giving importance to the idea. So you're putting the name of the author towards the end in the brackets itself, right? Now there are certain signal phrases, and how do we go for the in-text citation of these signal phrases? Signal phrases, they basically introduce someone else's work. And they signal that the words and the ideas that are about to offered belong to someone else, other than the author of the paper. Okay. So you see there are many cases when you see there are multiple authors are there, multiple authors. Like in the research work, I think all the faculty must be aware of this thing, that whenever we come up with the findings, after the research work, we say that, my findings, they are being supported by so, right? So similarly, this is the multiple authors. So, and whenever you go for the multiple authors together, which are having similar kind of finding or similarity in their verdict, right? So you write it in the alphabetical order. So J, K, S, like that. And if there is no author, as I've already told you, you can just straight away write the title itself, okay? And then end the paraphrase and the quote, and you provide the page number. Page number provision is needed when there is no author. And then if there is no page, so provide other, information in the signal phrase. For websites and other sources that lack page numbers, provide the author or the title and year in the signal phrase. So if you don't have the author, then provide the other information, right? If you don't have the page number, then provide the author or the title or the year, okay? Then now we synthesize also so many sources which are having similar findings. So you can see here when you try to synthesize means you're trying to combine the multiple sources together. So you can see here Bannis and Calvilli in 2016. So they have a common finding, right? They focus upon something in common. So the technology is fundamentally changing consumers' decision, and this can often feel like information overload. So, or you can also say you are combining their viewpoints together, right? So they are being, now you see, Bannis 2017, we have got semicolon over here, followed by the other author. Similarly, if I want to add few more authors, again, I will write semicolon over here, and I can add more authors. But this has to be in the alphabetical order itself, right? Now, this is very important, the direct quotation, because if you adhere to this APA style of referencing, obviously this is going to overcome the problem of plagiarism, right? So direct quotation, when it is under 40 words, okay, not more than 40 words. So you have to, direct quotation means you are directly taking the words. You're not changing even a single word for word you are writing. So if it is under 40 words, so you have to write the reference like this.
This I am talking about the in-text citation. This means in the body of the paper, in the body of the paper. So we'll write the name of the authors, the year, and you will mention the page number. And very important, you can see over here, the quotes, double quote over here. Because double quotes, this means you have taken the direct quotation, you have not changed a single word from of the concerned author, right? Then the if you are a direct quotation when the number of words are more than 40, okay? So you can see here, you are taking again the direct quotation. Again, also you have to provide the page number. But what is the point of difference? Because it is more than 40, so you have to leave indent over here. Okay, leave the indent. So and so, Jorgensen and Dole 2011, they found the following, and you have written the quotation over here, and you have mentioned the page number, leaving the indent over here. So if under 40 words, there's a different way of referencing. If it is more than 40 words, then it's a different way of referencing. Now, what if there are multiple authors? There are many authors, right? So if there are two authors, so how do you go for it? You use, this is called ampersand. You can see here, usually we say and, short form of and. Yes? We say a short form of and, Smith and Jones. So we use, this is called ampersand. Okay, this is being used between the two authors. If there are 3 or 4 or 5 authors, so in the first in-text citation, you will write the names of all the authors. There are 4 authors and you will use the ampersand, right? But then after the first citation in the text, suppose you have written in the first paragraph about these persons, so you will give the names of all the authors, and towards the end, last but one, you will use ampersand. But now again you want to give the reference of the same persons, right? You have used another quote of them, so now don't use all the names of all the authors. Instead, use et al over here. Okay, so in the subsequent citations, you will just write the name of the first author, surname, right? And then the et al, and then the year itself. So what if the author I am using is citing someone else? Now you see, this is a very common case. Whenever we go for any kind of research work, or we are into writing on a particular paper, we want to publish our paper. So we refer to so many sources, we refer to so many other articles also. And many a times the paper that you are reading, there is something that author has written in it, which is not his or her own work, rather somebody else's work. So he or she has given the citation of somebody else in his or her own paper. Okay, now how do we cite that? So in that case, you have to write in this way. Now you can see this is the article, so and so article by Emiskopoulos and et al. 2017. So they, in their work, in their article, it's written that social networks are web-based services that allow students to construct a public or semi-public profile within a bounded system. So in their work, this was given by B.Ed and Ellison. It was written over there. Now, this is of my interest. I am writing a paper upon social networking sites, let's say. So I think that this is useful for me and I want to use it in my paper. So what do? I will take this. I'll take this as such, right? And I will write B.Ed and Ellison as cited in Emiskopoulos et al. In 2017, this page. So in the in-text citation, apart from giving acknowledgement to the concerned authors whose lines I am quoting, I will also acknowledge the source from where I have taken this. And in the reference list entry, I will give the reference of the paper which I have consulted, that is Emiskopoulos paper. I will write in the reference entry. Is it clear to everyone? Yes, because this is very common, very common. We get confused. Now, how do we cite it? How do we cite it? So you have to acknowledge both the persons. Okay. Anji, I hope everyone is with me. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now, there's a difference in quoting, paraphrasing, and summarizing. Now, because when we are into writing, your dissertation work or your
synopsis or your paper writing, you go for different quoting, paraphrasing, and summarizing. Now, quoting is when you go for, like direct quotation. I've already told you, under 40 and more than that. So quotations, they use, must be identical to the original, and they use a narrow segment of the source. So they must match the source document word for word, and you must attribute it to the original author itself. And you make use of quotes, right? And the actual words, and another important thing is when you make use of these quotations, when the actual words are so integral to the discussion that they cannot be replaced. Usually we say that, if you want to reduce plagiarism, what do? You paraphrase it. But there are many times when the words which are being used by the author, they are so very important that you don't find any kind of replacement. So in that case, you can use the, quotations. Use quotations when the author's words are so precisely and accurately stated that they cannot be paraphrased. You can see the example over here. Stenberg and Lee 2002 agree that teacher learning is an intellectual and ongoing process. So you can see here in the quotes, intellectual and ongoing process. And the page is also mentioned over here. So as such, the same words they are being used. Then comes the indirect quotes, or what we can say the paraphrasing. So paraphrasing, as you know, you have to write in your own words. You have read, a paper or a paragraph, and you want to, write in your own words. And there also, even if you're writing in your own words, you have to attribute it to the concerned author itself. Okay, you have to acknowledge the person. So paraphrases are usually shorter, but maybe the same length as the original passage also. And they are more focused segment of the source and condense it slightly. So you can see the example of paraphrase. Lorty, 1975 research reveals classroom experiences as well as interactions among peers and colleagues contribute to teacher learning. So you have read certain things and you have tried to put it in your own words itself. Many softwares are also available these days, which help in paraphrasing the content many times when we get stuck. Then summarizing is there. Summarize, as you know, you have gone through so many papers or so many paragraphs or so many pages, and in one go you want to summarize whatever you have read in your own words. There also you need to give the citation. You have read so many pages, and when you have read so many pages, you must have different authors must have written different things, so you need to acknowledge them also along with the year itself. Write the name as well as the year. Now, if there is no author list, like for example, if there is no author listed, author is not there, write the article. Simple. If author is not there, write the article. Right? Summaries, they do not require page numbers. Like in the paraphrasing and in the direct quotations, we are providing page numbers. But summaries, because why don't we provide page numbers to the summaries? Because you are summarizing so many pages. So how can you provide the page numbers? Okay. So studies, see the example, studies show that throughout the colleges and universities, teachers are often hired from one area of study to teach the different area of study. So you can see here, it's been summarized, but there is no page number itself. Right? Now, so this was about in-text citation, right? I have taken the main points, the general rules, while now I'm moving towards the reference list entry. Apart from that, there are a few sections wherein I will be focusing both upon the in-text citation as well as the reference list entry, right? Wherein I feel that it is to be specifically noted down. Now, I'm talking about the second part, that is the reference list. So I would like to ask you one question, every one of you. Where do we find the references or the reference list, or where do we place the reference list in a paper? Ma'am, yes? At the end of the paper. Very good, beta. Very good. Who has answered the question? Deepti Jai. Very good. Very good. So it is at the end of the paper. Okay, some students are writing in the chat box also. Palak is also saying that it is at the end of the paper. Okay. I am reading in the chat box, some of the students, they have written that if it is bilingual. Okay, I'll try to be bilingual. Hanji bache. बाइलिंगुअल कहाँ चाहते हैं आप लोग? जहां नहीं समझ में आएगा वहां से मुझसे खुद ही पूछ लेना, वहां मैं हिंदी में बता दूंगी. ओके, राइट?
So somebody has written in the chat box. So when I talk about the reference list वो लिस्ट है जो कि एंड में आती है पेपर की, जैसे आप लोगों ने आंसर दिया है ना, जो पेपर है हमारा, we start with the paper, but when I am talking about the in-text citation, it is the body, मेन बॉडी है जो पेपर की. और जब मैं बात करती हूँ रेफरेंस लिस्ट की, रेफरेंसेस जिसको हम रेफरेंसेस का सेक्शन कहते हैं, वो हमेशा एंड में आता है. ओके, इट इज इन दी स्पेसिफिकली when we are writing a research paper or a research article or academic writing. Now a reference list lists only the sources you refer to in your writing. आपने बहुत सारे जो है जर्नल्स पढ़े, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट करी, ठीक है ना, तो उसमें से आपको जो आपको रेलेवेंट लगी, आपने वो सारी की सारी जो है उनको अपने पेपर में इस्तेमाल किया, और उसका आपको रेफरेंस देना है, उसको आपने एक्नॉलेज करना है अपनी रेफरेंस लिस्ट में. Right? So the purpose of reference list is to allow your sources to be found by the readers. For example, if I have written a paper, right, I have quoted somebody कि भाई हाँ मैंने ये वाले बंदे ने ये बात कही थी. अब सपोज पलक ने वो पेपर पढ़ना है, पलक जो है उसने मेरा वो पेपर पढ़ा, और पलक ये जानना चाहती है कि भाई ये जो मैडम ने लिखा है कि फलाने फलाने बंदे ने जो है ये चीज लिखी है, मेरे को इसका पूरा पेपर पढ़ना है, मैं कहाँ से पढ़ूं, मैं कहाँ से पढ़ पाऊंगी? मैं रेफरेंस लिस्ट पे जाऊंगी, वहां पर मुझे पूरी डिटेल मिलेगी उस पेपर की, और उसको मैं कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल दूंगी एंड आई विल बी एबल टू फेच द पेपर. और कई बार हमको DOIs भी मिले होते हैं, वहां से भी हम ले सकते हैं, URLs भी दिए होते हैं, वहां से भी हम ले सकते हैं. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यू अलाउ द सोर्सेज टू बी फाउंड बाय द रीडर to give credit to the authors that you have consulted for their ideas. So there it's the two purposes are being solved. First one, you are acknowledging the work of the other people, and not only acknowledging, you are also providing a kind of lead to the other readers to refer to their work. आपने उनका अपने पेपर में उनका काम रेफर किया, उनको साइट किया, अब किसी और ने उनका पेपर पढ़ा, मेरा पेपर पढ़ा, तो वो उनका पेपर पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो इससे क्या होगा, वो रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे और वहां से पढ़ लेंगे. तो आप देखिए कैसे नेटवर्किंग बनती है. इस तरीके से आप एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और आप वही इंफॉर्मेशन जो है सभी को इजीली अवेलेबल भी कर रहे हैं. Right? So all references cited in the text must appear in the reference list except for the personal communication. In personal communications, you don't give any in the reference list itself. So a bibliography, it is different from the reference list, as it lists all the sources used during your research and background reading, and not just ones you refer to your writing. Now you see there's a point of difference between references and bibliography. Usually when it comes to dissertation work or it comes to thesis writing, we have got bibliography, because when you are going for doctoral thesis, you refer to n number of reports, books, articles, periodicals, websites, right? And you at the back, you also read so many, books pertaining to the particular construct or the variable on which you are undertaking research, right? So in the bibliography, you are, giving the detailed information, detailed acknowledgement of the sources that you have read during your research work. ठीक है ना, आपने वो पढ़ी भी जो है, तो it is a list of all the sources used during your research and background reading, not just the ones you refer in your writing. अब references और bibliography में ये फर्क है कि references के अंदर, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया ना, in-text citation और reference entry दोनों पैरेलल एक पिक्चर दिखाई थी ना मैंने आपको. Let me just go back to that slide. ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये देखिए. I hope this is visible to everyone. अब जब मैं रेफरेंसिंग की बात कर रही हूँ, तो ये जितने भी यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हुए हैं, एलिफेंट स्टैम्पीड या कंसाइज डिक्शनरी या कॉलमैन दिया हुआ है या गिब्सन दिया हुआ है, ये वाले ही सोर्सेज जो हैं, जो सोर्सेज यहाँ लिखे हैं, है ना, वही रेफरेंस में होने चाहिए. इसके अलावा मैं और कुछ नहीं दे सकती पेपर के अंदर. मतलब रेफरेंस लिस्ट के अंदर वही एंट्री होगी जो कि इन टेक्स्ट साइटेशन है, एंड वाइस वर्सा. आपने यहाँ पे कोई चीज लिखी है और इन टेक्स्ट साइटेशन नहीं है, इसका मतलब मिसिंग है, वहां ऐड करें. अगर आपकी इन टेक्स्ट साइटेशन है वहां पर आपने रेफरेंस में नहीं डाला, इसका मतलब आपने रेफरेंस मिस कर दिया है, तो भाई रेफरेंस डाल दो.
ये पेपर राइटिंग में होता है, जब आप रिसर्च पेपर राइटिंग लिखते हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग करते हैं आप, ठीक है, आपको रिसर्च पेपर लिखने हैं, आप जो M.Ed वाले बच्चे हैं उनकी डेजिटेशन वर्क होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स से वो काम कर रहे होंगे, फिर उसको पब्लिश करना चाहते होंगे, उस समय आप रेफरेंसेस लिखेंगे। पर जब आप वैसे, जब हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफी की, जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो है अपार्ट फ्रॉम दी सोर्सेज, you know, whatever other material that you have read, you mention that also. बेटा, am I clear to everyone? मेरी बात सभी को समझ में आ गई है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So जो हम रेफरेंस लिस्ट की बात करते हैं, it lists only the sources you refer to in your writing. So you are only referring to the sources that you have mentioned in your writing. But when we are talking about bibliography, it is different from the reference list, as it lists all the sources you used during your research and the background reading also, not just the ones you refer in your writing. तो जो कुछ भी पढ़ा है आपने, वो सारा कुछ बिब्लियोग्राफी में आएगा, रेफरेंसेस वाला तो आएगा ही आएगा, पर उसके अलावा जो भी आपने पढ़ा है वो भी इसमें आएगा, राइट? नाउ देयर इज अ बेसिक फॉर्मेट. शुरू में आई थिंक गीतिका ने कुछ कहा था, गीतिका थी ना बच्ची, इसने आंसर दिया था. यस, गीतिका, आई थिंक, if I'm not wrong, one student who was given the answer pertaining to, or maybe some other student, I may be mistaken, कि जब हम referencing करते हैं तो हमारे पास उसका एक basic format है, right? We have got author's last name, first initial. This is one example I have taken. Author's last name. This is a reference for wherein we have got two authors. And first initial, right? And year, title of the article, title of the journal, volume, issue, page numbers, and the DOI itself. Now, when I am talking about the author's last name, this means I'm talking about the surname. Surname. For example, if Dipti Jain has written a paper, so if I want to, Dipti Jain has written a paper in 2021, अगर अब मैंने इनका रेफरेंस देना है तो कैसे दिया जाएगा? क्या लिखूंगी मैं पहले? You can write down in the chat box. जैन दी. हाँ जी, बताइए बेटा. You can write down in the chat. के बाद आप डी लिखेंगे. दीप्ति पूरा नहीं लिखेंगे. जैन के बाद क्या लिखेंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा आप लोग. जैन के ऐसे अलग अलग कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देखिए ना, यहाँ सरनेम आएगा पहले, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद इनिशियल्स आएंगे नाम के, और फिर ईयर आएगा. तो कैसे लिखेंगे? राइट डाउन इन दी चैट बॉक्स. दीप्ति जैन ने ही लिखा है. दीप्ति जैन, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, इस फॉर्मेट को फॉलो करो. नहीं. यस, पूजा वर्मा हैज रिटन. वेरी गुड पूजा. जैन, जे इज कैपिटल, सरनेम इट्स अ प्रॉपर नाउन है ना भाई, तो कैसे आप छोटा कर सकते हैं उसको? जे बड़ा होगा, जैन कॉमा डी फुल स्टॉप, राइट? और उसके बाद हम लिखेंगे ईयर. ठीक है जी, सभी बच्चों को समझ में आ गया है? हाँ जी, यस बेटा, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it clear? So this is how we write. It's an essential component of your referencing. ये आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने सरनेम लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपने इनिशियल लिखनी है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम क्या है? अंशु नारद, है ना? तो मेरा पहले क्या आएगा? नारद, उसके बाद कॉमा, और फिर ए कैपिटल, फिर फुल स्टॉप, राइट? अब जैसे मैम है रमनदीप कौर सिद्धू, तो मैम का क्या आएगा? सिद्धू, then comma, and then R.K. and then you can add the year itself. Okay. Similarly, we have got Palak Buddhiraja, so Buddhiraja, comma, P, capital P, because names are proper nouns. Okay, and then full stop, and then followed by the year itself. Clear to everyone? Yes. Okay, now you see there is a huge problem when it comes to referencing. It is quite confusing. Specifically, students, they get confused. What should we wherein we should go for italics and wherein we should not go for italics. भाई कौन सी चीज को हम italics में लिखें और कौन सी को हम नहीं italics में लिखें? उसका ना एक सिंपल रूल है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रूल है. पेरेंट्स जो है उसको हम क्या मतलब we give more respect to the parent, no?
hold the parent at a more what we can say mature position in comparison to the child itself. तो जो parent है ना उसको आपने italics में करना है, right? और जो बच्चा है उसको italics में नहीं करना। अब इसको हम रिसर्च में कैसे लेके आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कोई जर्नल लिया, ठीक है, जैसे हमारा कॉलेज का जर्नल है मैम का, जो मैम व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्नल एग्जैक्टली, रमन मैम, GHG खालसा। यस मैम, यस मैम, हाँ जी, यस मैम, हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਟਾਈਮ। मैम व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्नल एग्जैक्टली, कॉलेज का GHG जर्नल ऑफ सिक्स थॉट्स, GHG जर्नल ऑफ सिक्स्थ थॉट, एम आई राइट? है ना? तो ये देखिए, अब ये जर्नल का नाम है और इसमें से ये जर्नल के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने पेपर्स भेजे होंगे और रिसर्च पेपर्स होंगे, अलग अलग लोगों ने लिखे होंगे, है ना? तो अब इसमें अगर मैं एक रिसर्च पेपर की बात करती हूँ और जर्नल की बात करती हूँ, तो पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है, बताइए? बड़ा कौन है इसमें से, जर्नल बड़ा है कि पेपर बड़ा है? जर्नल बड़ा है, तो किसको हम इटैलिक्स में डालेंगे, बताइए? मैम जर्नल के नाम पे, ठीक है? ये सिंपल रूल याद रखना है आपने कि जो बड़ी चीज है ना उसको आपने इटैलिक्स में करना है, ठीक है? अगर सपोज जर्नल का नाम ही नहीं है तो आप सीधा वर्क को, जैसे मैंने आपको बताया ऑथर का नाम ही नहीं दिया हुआ या कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप सीधा वर्क टाइटल को इटैलिक्स में लिखेंगे। अब कोई बुक चैप्टर है, सपोज एडिटेड बुक्स होती हैं, उसके अंदर कि एडिटेड बुक्स का मतलब ये है कि इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ पेपर्स रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स इन वन बुक। आप एक बुक बनाते हैं, लेट्स से मैम ने एक बुक पब्लिश की, रमन मैम ने, उसमें मैंने भी पेपर भेजा, पलक ने भी भेजा, दीपिका ने भी भेजा, रीटा ने भी भेजा, देयर सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है? तो वो क्या चीज है, एडिटेड बुक हो गई, राइट? तो उसके अंदर अगर चैप्टर है तो अब मैं किसको करूंगी, बताओ? किसको मैं इटैलिक्स में करूंगी, चैप्टर को करूंगी क्या बुक को करूंगी? टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल ऑफ, क्योंकि वो बड़ी, ठीक है? ऐसे ही बुक टाइटल है, बुक जर्नल है, सिमिलरली जर्नल इशू नंबर एंड जर्नल वॉल्यूम नंबर, ठीक है ना? अब वॉल्यूम नंबर जो है वो बड़ा है, एक वॉल्यूम के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, राइट? तो हम वॉल्यूम नंबर को करेंगे। ऐसे ही वेब पेज जो है वो एक पेज है वेबसाइट का, तो हम वेबसाइट टाइटल जो है उसको इटैलिक्स में करेंगे। तो ये एक जनरल रूल आप याद रख लो कि भाई जो चीज बड़ी है ना, पेरेंट जो है उसको हमेशा हमने, जिसमें से आपने चीज निकाली है बाहर, उसको हमने हमेशा इटैलिक्स में करना है, राइट? दिस इज एज पर APA मैनुअल, okay? Now let me go for a peer instruction for all of you to know how far you people are with me. Okay, now there's a question for all of you. Out of the following, which statement is correct? But you can write down in the chat box, and everyone give your answer so that I'll come to know that you people are with me. You've really understood what I have taught till now. Okay, so out of the following, which statement is correct? A bibliography is same as a reference list. A reference list lists all the sources used during research and background reading. Bibliography is different from the reference list. Yes, everyone, write down in the chat box. Yes, Daljit Kaur, Harminder Singh, Harleen Kaur, Shweta Gupta, Rita Rani, Pooja Verma, Lovepreet, Jaspreet, Manvinder. Yes, everyone. Harjinder Singh, Gurleen. Yes, bachi, everyone. Okay, let me see the chat box. Okay. Yes, very good, very good. So I'm really happy to see the response. Students have, all the students, they have given the right answer, all the students. So it has really encouraged me that you people are with me. Okay, so C is the right answer. Very good. C is the right answer. Bibliography is different from the reference list, right? Okay, now you people are clear with the format, the general format and the rules pertaining to italics. Now one by one, I will be with the help of examples,
like how do we go for reference entries, right? Just a second. Okay. Now, because we are acknowledging the authors, so there are different ways. If we have got one author, it is different. If two authors, it is different. If it's three or more, it is different. So there are specific rules pertaining to it. Now, first of all, when there is one author, so you can see here, Coach, Junior, full stop is there because it's a title. You put comma, like we have already done this practice. Jan, comma, D, full stop. And then, year in brackets, and after the year also put a full stop or a period. So a single author is listed for the full last name. Last name or surname is full, a comma, a space. You leave a space also. First initial, a period. Period means full stop, right? A space. Middle initial and a period, and then a space, followed by the year in the parenthesis. This means in the brackets, and ending with a period. So you start with surname, you write the initials, the first initial, and then the middle initial, then you put the period also along with that, and then you put parenthesis, then in the parenthesis, the year is there, and then the period is there, right? Now, when it comes to two authors, same way of referencing. Only important thing that you have to notice is you have to use ampersand. Ampersand, ये जो मैंने रेड में किया हुआ है ना, इसको हम ampersand कहते हैं, या इसको हम यूजुअली कहते हैं शॉर्ट फॉर्म डाल लो एंड की, ये वो है, ठीक है। अगर 3 to 7 ऑथर्स हैं तो उस केस में भी लास्ट वाला जो ऑथर है उससे पहले आप ampersand डालेंगे। अगर मोर देन 7 ऑथर्स हैं तो वहां पर आप ये देखिए, रेफरेंस लिस्ट एंट्री में क्या करेंगे, यूज, ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, डॉट्स बिटवीन द 6th एंड द लास्ट ऑथर। अब 7 से ज्यादा ऑथर्स हैं तो जो 6वां ऑथर है ना, 6वां ऑथर के बाद ये डॉट्स डाल देंगे, ठीक है। और कब तक चलेगा ये, लास्ट ऑथर तक, राइट। देन और अगर इसकी हमने साइटेशन करनी है, इन टेक्स्ट साइटेशन, जो टेक्स्ट में आप बॉडी में लिख रहे हैं, तब आप जो है फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे और एट ऑल लिख देंगे और ईयर लिख देंगे। अच्छा, अगर अब क्या है, सेम ऑथर है, मैंने जो है वो पेपर लिखा है, एक पेपर मैंने जो है 2000 में लिखा है, 2020 में लिखा है, एक मैंने जो है लिखा है 2021 में लिखा है, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूंगी उसको, नारद, उसके बाद पहले कौन सा आएगा 2020, उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, लेटेस्ट कौन सा है 2021 है ना, वो लिख देंगे, ठीक है। अगर सेम ईयर ही है, सपोज सेम ईयर के अंदर ही मैंने 2 पेपर निकाल दिए हैं, तब मैं क्या करूंगी, 2020 A, 2020 B, या 1984 A, उसके बाद 1984 B। आप देखिए रिसर्च पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कई बार क्या होता है, सेम ही ऑथर में सेम ही ईयर लिखा होता है और ए भी डाला होता है, और इंटेक्स साइटेशन के अंदर भी ऐसा ही हुआ होता है, राइट। देन हाउ डू वी डॉक्यूमेंट दी बुक्स। बुक्स को कैसे हम, क्योंकि हम बुक्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, प्रिंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुक्स को कैसे हम डॉक्यूमेंट करेंगे, so this is the model that we adhere to, author, then the initials, then we use ampersand, date of publication, title of the book, first what will come, this is to be taken care of, city, पहले आप city बताएंगे, उसके बाद आप पब्लिशर बताएंगे। और पब्लिशर्स के अंदर कभी भी आपने ये जो लिखा है ना, ये देखो CO लिमिटेड, ये कभी हम नहीं लिखते हैं, उसके अंदर सिटी मेंशन करिए और पब्लिशर मेंशन करिए बस। जैसे आप ये सैंपल देख सकते हैं, इसके अंदर पेरेन, कॉमा, आर, पीरियड, देन पेरेंथेसिस में ईयर, फिर अगेन पीरियड, पॉकेट गाइड टू APA स्टाइल 2nd एडिशन, बोस्टन, इट्स द नेम ऑफ द सिटी, आउटन मिफिन, राइट। ये आपने पब्लिशर का नाम बता दिया। अब आप ये देखें, जब भी हम किसी भी बुक्स का रेफरेंस देते हैं तो जो ये फर्स्ट वर्ड है ना, ये फॉलो कर रहा है सेंटेंस केस को। APA स्टाइल जो है सेंटेंस केस को फॉलो करता है। तो सेंटेंस का फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल्स में होता है, हाँ जी, होता है कि नहीं होता है, फर्स्ट अल्फाबेट। मैंने कोई सेंटेंस लिखना है तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में होगा ना, यस मैम, है ना। तो ये उसी को फॉलो कर रहा है।
So there is no underlining in APA style. Instead, the major works or the works that contain other works, they are italicized. See, only the first word of the title is capitalized over here. अब ये जो है किताब का नाम है, किताब के नाम का जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल्स के अंदर है, ठीक है, राइट? In the titles of the books, only the first word proper noun, and if the colon is used, the first word after the colon are being capitalized. For example, आपने कई बुक्स में ना कोलन दिया होता है. कोलन मतलब दो डॉट्स होती है ना, एक तो सेमी कोलन होता है, एक डॉट और कॉमा होता है, एक होता है दो डॉट्स. तो अगर दो डॉट्स दी हुई है किसी टाइटल के अंदर तो उसके बाद वाला जो अक्षर होगा वो भी कैपिटल में होगा, फर्स्ट लेटर उसका, right? So all capitalization rules for sentences apply to APA book and article titles. So books को भी लगेंगे और article titles को भी लगेंगे. Capital after the colon being the one exception. Okay, so this is how we, adhere to the proper nouns also over here, the proper nouns as well as the sentences, because when we are writing sentences, we start with the capital letter itself. Okay, then now this is pertaining to a book chapter. This means when we are talking about the edited collections itself. So you can see over here, author name, same format. That is going to be the same for for all the referencing. So you will write over here edited, EDS. EDS means if it is ED only, this means there is only one author. एक ही बंदे ने बहुत सारे पेपर्स लिए और उसकी अपनी एक किताब निकाल दी. अगर जो है रमन मैम और मैं मिलके एक किताब लिखते हैं एडिटेड बुक, तो यहाँ पे EDS आएगा, राइट? और फिर आ जाएगा यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द बुक, यहाँ सिटी और फिर पब्लिशर. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर. देन यू कैन सी द सैंपल. So you see the sample, like I'll take this second one. Eastern B. Here, does poverty affect health? Now this is the paper written by Eastern in 2008. And where is this paper? Which in K. Dew and A. Matheson edited book. So this paper is available in their book. What is the name of the book? It is the Understanding Health Inequalities in New Zealand, and you mentioned the page and the details of the country as well as the press itself. Okay, so in the reference list, the main entry is your list, is the author of the chapter, include the page numbers of the chapter, right? Editor's first name, initial, surname. So you will give all these details in the reference list. अब इसकी in text citation कैसे करनी है? आपने तो भाई ये वाला पेपर पढ़ा है ना ईस्टर्न का, तो आप ईस्टर्न का रेफरेंस देंगे, चाहे आपने इस किताब में से पढ़ा, उसमें तो BCO पेपर होंगे, पर आपने ये वाला पढ़ा है तो आप उसकी टेक्स्ट में मेन बॉडी में कैसे रेफरेंस देंगे? ईस्टर्न 2008 और ईस्टर्न 2000 स्टेट्स दिस और ये पेज नंबर दे देंगे. ओके, राइट? देन how do you document the journals? अब journals को कैसे हम document करेंगे? Same pattern is there with few variations. So this initial is the same. So you write the title of the article. अब ये देखिए यहाँ पे ये periodical का title इसमें है, italics में है, volume number italics में है, क्योंकि volume number जो है बड़ा है, issue number छोटा है, इसलिए italics में नहीं. Okay, so you can see the sample. Coach Junior RT 2006 Building Connections through Reflective Writing Academic Exchange Quarterly. और ये जो वॉल्यूम है, अब ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरा कर्सर बच्चे सबको नजर आ रहा होगा होपफुली. ये जो लिखा है ना एकेडमिक एक्सचेंज क्वार्टरली, आप देखिए एकेडमिक का A बड़ा है, एक्सचेंज का E बड़ा है, क्वार्टरली का Q बड़ा है. पर बुक टाइटल में ऐसा नहीं है, वहां पर इनिशियल ही एक बड़ा है और यहाँ वॉल्यूम जो है उसको आप इटैलिक्स में करेंगे. तो जो आपका जर्नल का नाम है और जो वॉल्यूम है वो इटैलिक्स में रहेगा, इशू नहीं रहेगा इटैलिक्स में. और कभी भी आप यहाँ पर PP नहीं लिखते, PP स्टैंड्स फॉर पेज नंबर्स, तो PP नहीं लिखते हैं. ओके, सो नोटिस दैट द ऑथर, ईयर, आर्टिकल टाइटल आर ट्रीटेड जस्ट द सेम as we have discussed. The journal title cannot possibly be treated as a sentence, so it receives proper noun capitalization. आप इसको proper noun की तरह capitalize करेंगे and it is italicized since it contains smaller works in case of articles.
Notice the comma after the title indicating more information related to the location in the forthcoming. जब आप यहाँ पे कॉमा देखो, ये है हमारे पास जर्नल का नाम एकेडमिक एक्सचेंज क्वार्टरली, और ये है वॉल्यूम। एकेडमिक एक्सचेंज क्वार्टरली को हमने इटैलिक्स में किया। उसके बाद अभी दिख रहा है आपको कॉमा है छोटा सा, यहाँ पे मैं बड़ा करती हूँ, ये देखिए ये छोटा सा कॉमा है। ये कॉमा क्या बता रहा है कि भाई इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन है अभी, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये जर्नल के ये वाले वॉल्यूम के ये वाले इशू में इस पेज नंबर पे है, ठीक है जी, राइट। So the issue number is contained within the volume, so it is not a part of title, so we do not go for the italics. However, it works with the volume numbers to help identify location, so it goes right up against the volume number with no space between. इसके बीच में कोई spacing नहीं है, there is no spacing in between. Okay. फाइनली, क्योंकि जब आप अपना पेपर पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं किसी अच्छे जर्नल्स पे, जैसे कि जो ये स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं या यूजीसी केयर जर्नल्स हैं, वो ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई जो रेफरेंस लिस्ट है वहां से पता चल जाता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द पेपर, आपने रेफरेंसिंग को सही तरीके से फॉलो किया, राइट। सो फाइनली नोटिस दैट नहीं भेजना, ये देखो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, क्या I think there is some disturbance from the back end. It's okay now. Ma'am, you can continue, please. Okay, right. So finally, notice that another comma is shown followed by page number and no abbreviations for pages is used. Pages के लिए ना हम PP लिखते हैं, आपने कई जगह देखा होगा PP लिखा होता है, पर APS स्टाइल के हिसाब से आप PP नहीं लिखते हैं, कोई एब्रीविएशन नहीं यूज करते। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल पेज नंबर्स लिखे हुए हैं विद इन डैश, बीच में हाइफन नहीं डलेगा, इन डैश डलेगा। ओके, देन द ऑनलाइन जर्नल्स, क्योंकि बहुत सारे यूजुअली यू विल फाइंड जर्नल्स इन प्रिंट मोड एज वेल एज ऑनलाइन, है ना, और आजकल तो बहुत ज्यादा जर्नल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल है, यूजुअली इट इज अवेलेबल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द दीस जर्नल्स, just a second. So journal lists are the databases no longer require, if you are referring to a journals which are listed in the databases, like anyone who knows about, can you name few databases? Some databases. What are databases? Yes. Any idea to anyone? Hanji bache. Deepti, Palak is there. Then so many other students are also there who are responding. Dimple, Suchita, Lovepreet, Arshdeep, Shweta Gupta, yes. See, हम जब database की बात करते हैं, it is a collection of information or data, like we have got so many articles or we have got so many... Yes, bache? Yes, ma'am. It is a collection of data which we collected from various type of primary and secondary. Yes, right, very true. Now, when we talk about databases, can you name few? Can you name few? Like you see, you must have heard about. Hanji beta, yes. Hanji. Ma'am, Shod Ganga online platform is there for taking journals related to education. Yes. What else? See, Eric is there. Many types of scanning data. Courses and primary data like manuscripts or some handwritten data first hand. When we talk about the databases, it is a kind of what we can say a collection of information or data which is having articles or some periodicals or some kind of reports or like that. So we have got Eric is there. Then Crossref is there. So many databases are available. JSTOR is there, so you can refer to these databases. So when the journals they are listed on databases no longer require retrieval date. So if you are referring to some journal which is already listed in a database, so you won't require to provide the retrieval date. Retrieval date का मतलब ये है कि जिस दिन आपने उस पेपर को वहां से लिया, तो आपको डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही जो है
उस दिन की डेट देने की जरूरत नहीं है। और अ URL इफ इट्स अ प्रिंट कॉपी। और URL कब नहीं देना, क्योंकि ये तो समथिंग विच इज पर्टेनिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। अगर आपकी प्रिंट कॉपी है तो उसमें तो आप URL नहीं देंगे, right? So in this case, treat the source like a print version itself, except you would include the words electronic version in the brackets to indicate that you read and use the electronic form instead of the hard copy. अब कई जर्नल्स जो है वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। कई जो है दोनों ही अवेलेबल है। सपोज आपने अगर उसका ऑनलाइन पढ़ा है, आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पढ़ा है, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आपने पढ़ा है, हार्ड कॉपी नहीं पढ़ी है। Strictly online journals will require either URL or the DOI। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम DOIs जो है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। अच्छे जो पेपर्स जो हैं उनके DOIs होते हैं। आप DOI डालें, इमीडिएटली आपको सारा पेपर मिल जाए, राइट? सो यू कैन सी द सैंपल ऑफ द DOI। So Kenneth IA, this is the same, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। A Buddhist response to nature of human rights, this is the, you can see the name of the journal, right, comma, volume, this is the DOI। और अगर आपने URL देना है तो फिर आप वहां retrieved from लिखेंगे, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, URL जब आपने देना है तो आप क्या लिखेंगे, retrieved from। Sorry। Notice that URL is neither underlined nor blue। जब आप कोई भी URL पेस्ट करते हैं, मैंने कोई पेपर सर्च किया, ठीक है, अब आप उसको जो है वो आप पेस्ट करते हैं, उसका लिंक पेस्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, राइट? जस्ट अ सेकंड बेटा। ओके, तो आप उसका जो URL है वो पेस्ट करते हैं, तो उसके नीचे ना एक लाइन आ जाती है, पर APA के अंदर वो कहते हैं कोई भी अंडरलाइनिंग नहीं है, तो आपने उसको रिमूव कर देंगे, राइट? वो हाइपरलिंक होता है, उसको MS वर्ड में आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो in APA documentation and in-text citation, underlines they are not used, so you have to remove it। अब ये आप कुछ एक एग्जांपल्स देखिए, एक जनरल फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ कि जहां पर के आप yes, so this is article with DOI, digital object identifier, प्रिंट और ऑनलाइन। तो ये आपने ऑथर का नाम आ गया, ये जो है आर्टिकल का नाम आ गया, ये हमारे पास क्या है, जर्नल है। सेम पैटर्न, आई थिंक अब सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। सभी बच्चे मेरे साथ ही हैं? यस यस मैम। आपने जो है यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया, ये इशू हो गया, पेज नंबर हो गया, ये DOI लिख दिया, ठीक है जी। अब कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स होंगे जो प्रिंट फॉर्म में है जिनका DOI नहीं है, वहां पर आप DOI मेंशन नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, आप देख लेंगे। ओके, राइट? देन अब मल्टीपल ऑथर्स हैं, तो आप मल्टीपल ऑथर्स को, जैसे मैंने पहले बताया है आपको शुरू में, अगर ज्यादा ऑथर्स हैं तो कैसे मेंशन करना है, उसका ये फॉर्मेट है। ओके, और क्योंकि आपने इसको किसी वेबसाइट से लिया है तो आप लिखेंगे, आप वहां से उसका URL लिखेंगे, रिट्रीव्ड फ्रॉम, ये URL आपने लिख दिया। ओके, देन अगर आपने किसी डेटाबेस से लिया, जैसे आपने एरिक्स से लिया, आपने क्रॉसरेफ से लिया, JSTOR से लिया, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप वहां का, तो उस केस के अंदर जो है, जब भी कोई आर्टिकल डेटाबेस में DOI है तो आपने इसको कैसे लिखना है, एवरीथिंग इज द सेम, यू नो, यू विल लिस्ट द ऑथर्स, द टाइटल ऑफ द पेपर, द, यू नो, द name of the journal itself and all details, and then DOI, right? Similarly, जब कोई भी आर्टिकल डेटाबेस से ले रहे हैं पर DOI नहीं है, तो उस केस के अंदर आप क्या लिखेंगे, रिट्रीव्ड फ्रॉम। दो बातें ध्यान रखनी है, अगर DOI दिया हुआ है तो DOI लिखेंगे, अगर DOI नहीं दिया हुआ है तो आप लिखेंगे रिट्रीव्ड फ्रॉम और URL डाल देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया सब बच्चों को? यस, यस मैम। Okay, fine. Now, न्यूज़पेपर आर्टिकल फ्रॉम अ डेटाबेस, बहुत सारे आप देखिए ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है। आपने कोई आर्टिकल अपनी स्टडी में कोट करना है, कैसे करोगे आप उसको? तब आपने होम पेज का जो है URL देना है न्यूज़पेपर का। सो दिस इज, यू कैन सी हियर द ऑथर, द ईयर, मंथ एंड डेट, क्योंकि न्यूज़पेपर रोज आता है, डेली आता है, तो आपको डेट बतानी पड़ेगी कि भी फलाने फलाने दिन, फलाने फलाने महीने, फलाने फलाने साल ये बात होती है। ठीक है,
Check out the colors of the autumn on the two-wheel gateway. So St. Louis Post Dispatch retrieved from, this is the URL. But herein you will take the URL of the home page. आप न्यूज़पेपर के होम पेज पे जाओगे, क्योंकि डिफरेंट पेजेस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, वो डिटेल्स दे दी, पर होम पेज का आप यूआरएल डालेंगे, ठीक है। अगर आपने वेबसाइट्स को डॉक्यूमेंट करना है उसको कैसे करेंगे हम? सो यू वी कैन सी ओवर हियर मॉडल फॉर ऑथर डॉक्यूमेंट फॉर द होल साइट. अगेन author name, date of publication, title of the article, document retrieved from, paste the URL. Model for the authored page or article from a site, किसी site से ले रहे हैं, again same thing, but you have to write retrieved from so and so, provide the URL. Now there can be a case when there is no author, कोई author ही नहीं है, बताओ. Article found on the resource website. So you have, how do we write it now? So अब आप क्या करेंगे? जब हमारे पास author नहीं है तो हम क्या करते हैं? फिर हम वर्क ले लेते हैं, हम टाइटल उठा लेते हैं, ठीक है ना. किसी ने भी डाल दिया कुछ भी लिखकर, एनोनिमस है, आप एनोनिमस नहीं लिखोगे वहां पर, आप टाइटल लिखोगे वहां पर और साल डाल दोगे, और उसके बाद जो है जहां से आपने इसको लिया है वो लिख के उसका यूआरएल डाल दोगे. सो नो ऑथर. हाँ जी बेटा. यस. अगर हम खुद से कुछ बनाए तो उसके लिए भी टाइटल, खुद से कुछ बनाए मतलब कुछ खुद से कोई डेफिनेशन क्रिएट करें, खुद से कुछ डेफिनेशन क्रिएट करें आप. अगर हम खुद से कोई डेफिनेशन क्रिएट करें कहीं से, नहीं ऐसे नहीं होता है. आप wherever we try to, okay, just a second, let me, before I answer, I would like to take the opinion of other students also. हाँ जी, रीटा ये कह रही है कि हम अगर अपनी कोई खुद की डेफिनेशन बनाए तो that will not put it in a reference because we are only creating it in our fresh article, so we'll not mention it, will not document in references. हाँ जी, what about the other students? बताइए. Let me see the chat box. Yes, yes. रीटा का सवाल मुझे ये समझ में आया कि रीटा ये कह रही है कि मैं अपनी खुद की डेफिनेशन बनाऊं. रीटा मैं ये जानना चाहती हूँ अपनी डेफिनेशन कैसे बनाओगे बेटा? कैसे बनाओगे डेफिनेशन अपनी आप? मैम जैसे हम बात करें मान लो टीचिंग की, व्हाट इज टीचिंग, है ना, कुछ उसकी डेफिनेशन होगी जो काफी ऑथर्स ने दी होगी. हाँ. और कुछ हम अपने लेवल पर भी एक्सप्लेन करेंगे कि टीचिंग ऐसा है ना, होगा चाहे सिमिलर, लेकिन वो हमारी वर्डिंग में होगा. हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमने बहुत सारे ऑथर्स की डेफिनेशंस को, कंटेंट को पढ़ा और उसके बाद उसको हमने अपनी भाषा में लिखा, तो वो क्या है? पैराफ्रेजिंग, और यू आर गोइंग फॉर समराइजिंग, राइट? So okay, so in that case, you know, you have to mention the authors. Okay, so this is, just go through this, you know, you have to in case of news articles also you have to provide this information. Okay, then similarly, this I've already taken this point. Yes, this point also taken. Similarly, when it comes to websites also, same pattern is being followed. Okay, when there is no date, in that case also HTML. So you have to provide the date, because you know HTML is something you keep on updating the websites. Similarly, when we talk about website PDFs also, therein there's no need to provide the date, because it doesn't change. The date of retrieval doesn't change. Similarly, we have got, you know, documenting online communities also. So for different documentation, we have got different ways of you know, like writing the reference. So you can just have a look at this. For blog post, it is going to be different, but everywhere you have to provide the URL, retrieved from. So this is the common aspect. Then for magazine articles also, same, you have to provide, because magazines is monthly, so you have to provide the year, the month, the date if it is there, the title of the article, the title of the magazine, again volume number, and then the retrieval if it is online, so provide the URL.
Similarly, if there is no DOI, so provide URL. If DOI is there, then provide DOI. ये सेम ही रहेगा. ऐसे ही encyclopedias को अगर आपने मेंशन करना है तो यहाँ पर भी आपने रिट्रीवल का URL दिया है. अगर कोई ऑनलाइन न्यूज़लेटर है वहां पर भी आप ऐसे ही करेंगे. अगर सॉफ्टवेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पर आप MS Word 2003 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखेंगे और उसका ये देखिए WA माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. ओके. Then similarly, अगर book translation है, then it is to be written like this. So there's a specific format. Introduction, preface, forward, afterward, इसकी specific introduction है. अगर बहुत सारे volumes है और आप single volume की बात कर रहे हैं, volume mention करिए. अगर जो है multiple volumes है तो आपने सारे mention करने हैं, तो volume 1 से लेके 3 तक आप mention करें, right? देन अगर आपने कोई बुक यहाँ से ली है, वर्ल्ड वाइड वेब से ली है, तो अगेन रिट्रीव फ्रॉम प्रोवाइड द URL. तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ना, उसमें आपने रिट्रीव्ड फ्रॉम लिखना है अगर आप URL लिख रहे हैं, और अगर आपके पास DOI है तो आपने DOI वहां पर मेंशन कर देना है, राइट. ऐसे ही यहाँ पर जो है, जो हम डिस्क्रिप्शन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल से लेते हैं, ये भी एक तरह की कलेक्शन है, एक रिपोजिटरी है US एब्स्ट्रैक्ट्स की. ओके. तो उसके 3 सेक्शंस हैं, और जो सेक्शन ए है वो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के साथ डील करता है, तो उसका आप ऐसे रेफरेंस देंगे. बेसिक रेफरेंसिंग सेम ही है सब में. अगर कोई अनपब्लिश्ड मास्टर थीसिस है, कोई पेपर नहीं निकाले, कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में नहीं दिया है, तो बुक फॉर्म में नहीं दिया, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट्स में अनपब्लिश्ड मास्टर थीसिस. सिमिलरली कोई कमर्शियल डाटाबेस से लिया है, सेम थिंग, प्रोक्वेस्ट से ले रहे हो, इट्स अ डाटाबेस, इसमें फुल टेक्स्ट होता है डिसर्टेशंस का और थीसिस का, राइट. ग्लोबल डेटाबेस है, उसको डॉक्यूमेंट नंबर भी होता है, वो भी आपने प्रोवाइड करना है. ऐसे ही URLs प्रोवाइड करिए. अगर कोई इंस्टीट्यूशन का है और कमर्शियल डेटाबेस है, तो वहां पर भी आप उसका URL प्रोवाइड करेंगे. देन एनुअल रिपोर्ट्स का भी यही फॉर्मेट है, बस यू हैव टू राइट अबाउट द एनुअल रिपोर्ट इन इटैलिक्स. ओके. एंड अगर कोई अनपब्लिश्ड पेपर है, मीटिंग में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट द टाइटल ऑफ द पेपर इन द italics and then post a presentation presented at the meeting so and so place. Okay. And then for pictures, for the films also, you have to mention the producer, the director, the picture itself, motion picture, and the place and the studios. Similarly, when it comes to recordings, so there also you have to write in brackets CD. Okay. And then we have got the television broadcast, so you have to write the writer and director, and where it is being broadcasted, who is the executive producer, you have to mention it. And then in the ERIC documents also, if it is unpublished, so you have to write out the unpublished thesis. So you retrieved from so and so, and it is having a document number also. Blog post also, I have already told you, you have to write the URL. For blog comments also, you have to write the URL. So this is the basic format for referencing, reference list entry. And I have written the references from where I have taken all this material. So it is American Psychological Association primarily, and so many other sources I have referred to for preparing this presentation. So this is how we write the, the references, right? So if you have any questions, you can ask. Yes, beta. Is there a query? You can ask your question and put your question in the chat box. Ma'am, in the last slide where you have mentioned the references, at the end you have written quotation, paraphrasing and all that. Like, what is the significance of that in the last slide? मेरे को जो भी स्टूडेंट पूछ रहा है, मेरे को बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आप बताइए क्या कह रहे हैं. ये वाली स्लाइड पूछ रहे हैं आप? यस पलक, ये वाली ये पूछ रहे हैं बेटा, बताइए. हाँ जी मैम, जो लास्ट 58 स्लाइड है. हाँ जी, हाँ जी. इसमें आपने एंड पे लिखा हुआ नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट. हाँ जी, ये वाली लास्ट में लिखा है कोटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग. लाइक व्हाट, व्हाई वी हैव रिटन दिस. हाँ भाई, अभी तो मैंने आपको बताया ऑथर नहीं है कोई भी, मैंने वर्क का नाम लिख दिया सीधा. ओके. हाँ बताया ना आपको, अगर ऑथर नहीं है तो वर्क का नाम लिखिए सीधा. ये जो है यहाँ से लिया गया है, ये रिट्रीव्ड फ्रॉम दिस. This is the title of the article. Yes. ये वर्क है जो काम है, और ये प्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन राइटिंग लैब से लिया गया, और ये उसका URL है. अगर देखो ऑथर नहीं है ना, तो आप वर्क डालेंगे. ठीक है जी. यस.
Any other question? मैम हाँ जी बेटा। ज्यादा अच्छी रिसर्च जो किसी ऑथर के नाम से रेफरेंस देते हैं हम बिब्लियोग्राफी में, कैसे क्या करें बेटे? बिब्लियोग्राफी में ज्यादा अच्छी रिसर्च वो मानी जाती है जब हम ऑथर का नाम लिखते हैं या रिट्राइव फ्रॉम लिखते हैं। ज्यादा अच्छी रिसर्च वो मानी जाती है? ऐसा तो कुछ नहीं है। पूछ रहे हैं कि डिफरेंस तो नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। आप आजकल इतना मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं बेटा। आजकल तो एवरीबडी इज लाइक गोइंग ऑनलाइन, है ना? तो आप URL क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्या आपने वो चीज वहां से ली है? यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ मैं जी आपका सवाल सही समझूं कि नहीं? हाँ जी मैम। है ना? बाकी ऑथेंटिक सोर्सेज जो है, देखिए वो गुड जर्नल्स हैं, है ना? जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जर्नल्स की। UGC केयर लिस्ट में जो जर्नल्स हैं, या स्कोपस में जो जर्नल्स हैं, या वर्ड ऑफ साइंस में जो जर्नल्स हैं, दे आर गुड जर्नल्स। यस। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, beta. Okay. So there is no question more. No? So I think there are some doubts also. Students, मैम ਜਦੋਂ वर्कआउट ਕਰਨਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗੇਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। So thank you so much ma'am for sharing valuable view on the topic styles of reference with special reference to APA। मैम तुसी बहुत डिटेल एंड बहुत एलैबोरेटिव वे नाल इस टॉपिक ਨੂੰ स्टूडेंट्स ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ स्टूडेंट ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट्स ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੀਡ ਆ ਜੋ स्टूडेंट ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ synopsis and thesis ਦੇ end time ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ thesis ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਜ਼ਰਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਰਕ। सो क्योंकि मेन एंड वन थिंग मोर मैम प्रॉब्लम जो बेसिकली बच्चों ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਕਿਵੇਂ ਕੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। So thank you so much। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਕਨਸੈਪਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ DOI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ URL ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਿਟਰੀਵ ਫਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਐਡੀਟਡ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਔਰ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਰੂਟਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ B.Ed ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। So thank you so much ma'am for sparing time. I on behalf of GHG management, principal, staff and students of the college extend very heart vote of thanks to the resource person of the day who spared time for his busy schedule to grace the occasion and enlightened us on the topic in this value added course. Thanks to all the teachers and students who were directly or indirectly helped to make the function or event more successfully. Thank you so much ma'am. Thank you very much ma'am. Thank you very much for giving me this opportunity and I would like to appreciate all the students as well as the organizers and the students that really participated, though I felt a lot of constraint because when it comes to workshops so you need to go for some kind of writing work also, so I was feeling that kind of constraint over here. But I hope that my presentation will help them to overcome all their doubts. Yes, so thank you very much for giving this opportunity. Definitely. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Anshu. It was wonderful. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much.
Students, please mark your attendance firstly, then leave the meeting, please. Just wait. Jasleen ma'am want to talk to. Excuse me, ma'am, please resend the link for the attendance. A mediocre teacher explains, a good teacher demonstrates, and a great teacher inspires. A journey which began over 100 years ago. This is the story of Guru Har Gobind Sahib Khalsa College, also known as the Wonder in Rural Hinterland.